Recap what we did yesterday. Who's going to tell me what is a colony? Let me try if it helps in any way. Can you hear me? Yes, sir. Okay. My question is. Sir, Can you hear me? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, good. What Sir, is a colony? I said. yes, sir. Colony is a place that is occupied by uh, other power country, both politically and economically. ये कल आपने बताया कल मैंने बताया था. नहीं, मुझे ये याद है मतलब. Okay. A colony is a place that is occupied so that resources, and resources include both political and economic, as well as human resources, are exploited by those occupying it. Yes, sir. And we also discussed that there are two types of colonies. Yes, One sir. are Occupation and exploitation. exactly. One are the colonies of occupation, and the other are the colonies of settlement. Okay. What are the colonies of settlement? Can anybody tell me that? Not Maria Zulfikar, of course. Nawal, yes. Settlement colonies where they जहाँ पे वो लोग जाते हैं और जाके रह लेते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं, such as India. In India, like they come, British come over there, but they settled there down. Did they settle down there, or did they just occupy, Yes, sir. stayed there, and then left? However, in colonies Then- of settlement, they Yes, sir. settled These down. settlements are more, Not that they. yes, sir. These settlements are more cruel, and it was bad. And these colonies were made for lust for power, money, and resources. Okay, all the colonies were made for the sake of lust of power and greed, and but you know, the colonies of settlement, as the name suggests, they settled there. For example, South Africa, the United States of America, as we have it today, and other parts of Americas. Those were all the colonies of settlement. In the same way, Australia was a colony of settlement because the Europeans settled there. They stayed there for all times to come. They are still there, and they have made them Yes, their sir. own country. Those are the colonies of settlement. As far as occupation is concerned, India and several states in Africa were occupied. They stayed there, exploited their resources, killed people, and after some time, they left. Right? Yes, sir. So these are the two types of colonies that were established by the Europeans. Remember, when we talk about colonialism in the modern sense, we are referring to the European colonialism. Fine. Another thing that we discussed during the last class was why don't we include the American literature in the colonial literature, post-colonial literature? And what was the reason? We discussed that the United States of America is playing the role of a neo-colonial power. It's a neo-colonial power. Yes, sir. It is itself colonizing people. It does not colonize others through military force and occupation, that is physical occupation. Instead, it uses several other instruments, and these instruments include economic and
social tools. As far as the economic tools are concerned, then we know that the United States of America controls the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank. And there are certain other commercial organizations that are controlled by the United States. It uses them. Then it also attacks other countries, settles down there, changes the regimes and the governments, and then leaves that place. It installs the governments and regimes in other parts of the world. ठीक हो गया? The primary Yes, sir. objective is Yes, the primary objective of all this is to establish its own hegemony over the world affairs. दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहां पे अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए अमेरिका और उसके साथ ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और बाकी ममालिक ये सारे काम करते रहे. All right. So, what is post-colonialism then? Sir, the period and the effect of the colonialism after they go, after the colonialism is over, the period and the after effects. All right. Yes, sir, on Oh, politics, culture, economy, and social issues. Moreover, their culture mixed up with that culture. The colonial and the colonizers' culture mixed up. mhm. So it's an academic discipline, basically. Post-colonialism is an academic discipline, and it looks at the effects of colonization and colonialism on the culture, the economy, the social relations, the politics of the people and the nations that were colonized by the Europeans. So when we talk about post-colonialism, we are basically talking about the effects of colonization on the people and nations. And these effects include politics, culture, economy, and all other social relations. And we also discussed few examples of those effects. For example, Yes, sir. language, the most Yes, important sir. and potent force that we see and the effects of which are observed in Pakistani society, in the Indian society, in Sri Lanka, in Africa. It's English. Eating habits. Then our eating habits, right? The way we eat is no more the same as we used to eat before the British came here. Then the choices in our food, they are also different. No? Yes. Earlier yes, on, sir. we used to eat simple food, food that was grown in our own farms. Now we're dependent on McDonald's and KFC and Pizza Huts and all other food chains springing up in our country or in our region, in fact. And all those chains have something to do with the multinational companies. Why? Because we are psychologically and mentally captivated by the colonizers. अभी तक भी हमारे ज़हन में उन्हीं की superiority बरकरार. फिर ये भी हमें ज़हन में रखने की जरूरत है कि जो colonial structures थे that they left behind are still there. For example, the institutions that they left behind are still there. Those are the institutions that are powerful. Institutions that are represented by the people are not powerful. ठीक हो गया?
sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। हाँ, मुझे ये बताइए अच्छा, did we talk about the theories that we would be discussing here? No, sir. तो सर हम लोगों ने पोस्ट कलोनियलिज्म पे यही बैन किया था। Fine. So today we will also talk about theories that we will be discussing in this course. Can you see the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can you read this? Yes, sir. Orientalism by Edward Said. This colonialism is a concept that was put forth by Edward Said, who was a Palestinian American, and he said that the Europeans looked at the East as a place that has inferior men and women who can be occupied. There is something wrong with that land. This thing was not just in their thoughts. It was not just a figment of their imagination. They put it in practice as well. Orientalism, according to Edward Said, was used as an academic discipline as well. The Europeans were taught in their schools and colleges and universities that Orientalism, that the Orient, that the people living in the Orient lack certain things that the Europeans have. In this regard, it was racial in nature as well. कि जो Europeans हैं, वो ज़्यादा manly. European जो men हैं, they are more manly than the Oriental men. अब वो इसको सीधा ये नहीं कहते थे कि ये ईस्ट या मिडल ईस्ट या इंडिया या अरब द अरब वर्ल्ड और अफ्रीका, नहीं, वो इसको ओरिएंट का नाम दे देते। तो एक इमेजिनरी लैंड क्रिएट कर दी गई थी लोगों के जहन में कि एक जगह ऐसी भी है। अब वो जब उसको प्रैक्टिस में लाया गया, लोगों के जहन में तो ये था ना कि कोई ऐसी लैंड भी है जिसको ऑक्यूपाई करने की जरूरत है, एक ऐसी लैंड है जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इंफीरियर, एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूरोपियंस जाके सिविलाइजेशन और कल्चर अपना इंट्रोड्यूस करा सकते। तो फिर जब उसकी तलाश शुरू हुई तो सारे के सारे ईस्ट की तरफ पहुंच गई तलाश। तो इट वाज बेसिकली Edward Said believes this. डॉक्टर शहबाज की सर आवाज आपकी आवाज इसलिए बहुत कम आ रही है और सर शहबाज की ज्यादा आ रही है। यस यू आर। आप आहिस्ता बोलें, जितना आहिस्ता मैं बोल रहा हूँ आप उतना आहिस्ता बोल। अच्छा, नहीं आ रही उनको आपकी आवाज, अब तो नहीं आ रही डॉक्टर शहबाज की आवाज, ऊंची नहीं आ रही। कैन यू हियर मी नाउ? सर थोड़ी कम हो गई है। अच्छा, लेकिन मेरी आवाज तो Yes, आ रही है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। So according to Edward Said, Orientalism was a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between the Orient and the Occident, which
in which an essentialized image of a typical Oriental is represented as culturally and ultimately biologically inferior. कि इल्म के लिहाज से भी और अकदार के लिहाज से, इन दो लिहाज से, इल्म और अकदार, इन दोनों लिहाज से फर्क बनाया गया किसमें? ओरिएंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट वो जगह थी जहां पे यूरोपियंस रह रहे हैं, और जहां पे यूरोपियंस नहीं रह रहे, और वो जो जगह मशरिक की तरफ है, ईस्ट, दैट इज, तो सारी को क्या कहा गया? ओरिएंट। ठीक हो गया? अब ओरिएंट Yes, का sir. यस सर। ईस्ट में रहने वाले हैं, उनका इमेज वो कल्चरली और बायोलॉजिकली इंफीरियर बना दिया गया कि वो इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर। अब इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम देखें। दूसरी चीज, हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या होती है? दो कॉन्सेप्ट्स हैं। हाइब्रिडिटी और मिमिक्री। ये एक थियरिस्ट है, भाभा नाम है इसका। ये भाभा ने भी होमी भाभा नाम है। ठीक है जी। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में सुना हुआ? सर वो जो ऑटो और मैनुअल एक टाइम पे मतलब दोनों फंक्शन होते हैं, शायद, मुझे ज्यादा नहीं पता। अच्छा, हाइब्रिड गाड़ियां वो होती हैं जो कि पेट्रोल पे भी चलती हैं और साथ बैटरी पे भी चलती हैं। ओके सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो हाइब्रिडिटी है ना, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। और एक जिस तरीके से वो मिक्सिंग होती है ना वहां पे उस गाड़ी में, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। पेट्रोल भी, और दूसरी क्या है? बैटरी। यानी इलेक्ट्रिक कार भी है वो, और पेट्रोल पे चलने वाली कार भी। ऐसी कार को हम हाइब्रिड कहते हैं। जो हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आया बायोलॉजी से, लेकिन इसका बहुत, जो हम पोस्टकोलोनियल टर्म्स में इसको यूज करते हैं, इट इज मिक्सिंग ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कल्चर्स। इसको जब हम प्योरली इस अपने पोस्टकोलोनियल लिटरेचर्स में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? मिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स of the colonizer and the colonized people। ठीक हो गया? इन दोनों के यस कल्चर सर। को। अच्छा, अब ये कल्चर क्या है? ट्रेडिशंस, वेज ऑफ लिविंग,
norms, values of a particular area. सोशियोलॉजी में पढ़ा था कल से। Yes, sir. Yes, dear. आइडियाज होते हैं। और क्या होता है? Customs and Sir, traditions होते हैं। customs, values, traditions, ways of living, Okay. and thought process of a particular region, because culture vary from region to region. So culture varies from region to region because people living in those regions are different, right? It is the group or the community Yes, that is sir. important. It is the group or the community that is Yes, sir. important. अच्छा, तो अब हाइब्रिडिटी जो है ना उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है। हाइब्रिडिटी ये नहीं है कि एक ही किस्म की हाइब्रिडिटी होगी, ठीक है? मुख्तलिफ किस्में होंगी। Yes, मसलन एक जो बहुत ही बेसिक फॉर्म है ना उसको कहा जाता है रेशियल हाइब्रिडिटी, मिक्सिंग ऑफ रेसेस। फॉर एग्जांपल एंग्लो इंडियन, ये सुना हुआ? Yes, sir. जो Yes, ब्रिटिश यहाँ sir. पे आए, जो ब्रिटिश यहाँ पे आए उन्होंने ये गोरियों देसी खवातीन से शादी की और फिर वो क्या हो गए? एंग्लो इंडियन। Anglo इनकी नस्ल Indian. आगे नस्ल पैदा हुई तो ये रेस के अंदर आ गई। अच्छा, फिर लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी होती है। उसमें क्या होता होगा? Sir, merger of language. ठीक हो गया? फॉरेन लैंग्वेज एलिमेंट्स एंटरिंग इनटू लोकल लैंग्वेज। फिर ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। मसलन वर्ड था बंगला, एक बंगलो है और एक वर्ड है कार, ठीक है? अब हम कार को कार क्यों कहते हैं? उर्दू में भी कार क्यों कहते हैं? हमारे पास कोई वर्ड नहीं हो सकता हो? गाड़ी होता है ना, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कार। ठीक है, और ये सिर्फ एक वर्ड की बात हो रही है ना। देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स एंड देयर आर सो मेनी अदर एक्सप्रेशन एंड द वेज वी स्पीक। हमारे जो इंग्लिश बोलने उर्दू बोलने का अंदाज होता है वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द वे वी स्पीक इंग्लिश। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर इसी का ये जो लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी है इसके अंदर ही एक किस्म होती है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी, जिसमें जो लिटरेचर है वो भी उसी से इम्पैक्ट उसका आता है फॉरेन लिटरेचर से। ठीक है? Then, third one is cultural hybridity. And this is the most important of them all, as it covers almost everything. So our ways of behaving and even conception of our ideas also changes. So it's the mixing of the culture.
from art to music and dressing, everything changes. जो शलवार कमीज हम पहनते हैं उसमें जो कमीज है वो कुर्ता अब दोबारा इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन उससे पहले वो जो कमीज चलती है जिसके ऊपर कॉलर होते हैं और बटन लगे होते हैं जिस अंदाज से, वो कहाँ से आई? वो जो शर्ट पहनी जाती है, शर्ट और कमीज, ये दोनों शर्ट और कुर्ता, इन दोनों का मिलाप बन के हमारे पास कमीज आ गई। ऐसा ही है। हमारी म्यूजिक जबकि पहले क्या थी, अब क्या है? ये कल्चरल हाइब्रिडिटी है या नहीं? अच्छा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर एक आखिरी जो किस्म है इसको हम कहते हैं रिलीजियस हाइब्रिडिटी। हम करने की कोशिश करते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इंसानी ज़बान या इंसानी जो ज़बानें हैं वो जिस तरह की हैं, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो साउंड सिस्टम है, जो पैटर्न्स हैं, वो जिस तरह के हैं, वो क्यों है इस तरह के? What is the reason behind that? जी, रिलीजियस हाइब्रिडिटी क्या होगी? Like ये के लिए है, we study the history. The interaction of different religions. When the British came here, they didn't come alone. They came with their religion, right? And their religion was also missionary in nature. They spread their religion in India. अब क्या हुआ, यहाँ पे हिंदुइज्म भी था, मुसलमान भी मौजूद थे, सिख भी थे और अब क्रिश्चियंस भी आए। अब जब डिफरेंट रिलीजन्स व्हेन दे इंटरैक्ट, दे टेक, पीपल टेक वन थिंग फ्रॉम वन रिलीजन एंड अनदर थिंग फ्रॉम अनदर रिलीजन। ठीक है? यस सर। जब रिलीजन्स मिक्स होते हैं तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम से जब आते हैं और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो रिलीजियस प्योरिटनिज्म है ना वो खत्म हो जाता है। और कैसे है कि हम एक ही बंदा बहुत सी जुबानें, ठीक होगा जी। ये है हाइब्रिडिटी और इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स। मिमिक्री। नाउ व्हाट इज मिमिक्री? आप लोगों ने कभी की है मिमिक्री? नो सर, लेकिन देखिए क्या होते हैं मिमिक्री? किसी भी पर्टिकुलर इंसान को कॉपी करना, उसका ह्यूमर बनाना। जी ठीक है। अच्छा, in postcolonial terms, mimicry is the imitation of the culture of the colonial power by the colonized. अब आप लोगों ने देखा होगा अपने कल्चर में कई दफा हमें नजर आता है कि लोग यूरोपियन कल्चर को इमिटेट करते हैं।
उन्हीं की तरह कपड़े भी पहनते हैं, उन्हीं की तरह अंदाज होता है उनका गुफ्तगू का भी, सोचने का भी अंदाज उसी तरह। एक बिस्किट होता है जो बाहर से काला और अंदर से गोरा होता है, बिस्किट क्या कहते हैं उसको? मोनास्टिक शायद। सर ओरियो, ओरियो बिस्किट। ओरियो, एग्जैक्टली। ओरियो में क्या खास बात है? नहीं नहीं, नॉर्मली है। अच्छा, जरा जरा इसको देखिए। नजर आ रहा है? जी सर। बाहर से डार्क ब्राउन है, अंदर से सफेद है। ये टर्म ओरियो यूज की जाती है उन लोगों के लिए जो ये मिमिक्री करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। और ये क्या होता है? कोकोनट। इसके अंदर भी वही खूबी होती है ना, ये बाहर से क्या है? Diagram मतलब slide. ये बाहर से क्या है? ब्लैक, डार्क ब्राउन, और अंदर से सफेद। ये भी उन्हीं के लिए, देसी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ख्वाहिशमंद होते हैं कि उन्हें गोरा बाबू दिखाया जाए। फाइन। Yes, sir. So, under the inferiority complex, the colonized people start imitating the colonial power. This results in mimicry. But is it simply confined to dress or language? No, it is not. There is imitation in language, in dress, in politics, and also the cultural attitude. Why does that happen? It's quite natural, because human beings always imitate those who are in a position of power. Why do they do that? Because they want to have access to that same power themselves. People imitate others in a position of power because they want to have access to the same power themselves. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये ज़हन में रखिए कि इन चीजों के बारे में हमने ज्यादा तफसील से बात करनी है। इस वक्त हम इनको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. अच्छा, फिर एक
और theory आती the subaltern. देख पा रहे हैं आप? यस सर। तो ये subaltern क्या होता है? Subaltern is basically a lower rank official in arms. Lower rank. Anyone else studied? In postcolonial theory, Please give a big hand. सब लोग subaltern refers to mic on करके the disadvantaged groups. Well done, आयशा। बहुत शुक्रिया आयशा। अब अपनी सोसाइटी के अंदर देखिए आपको कौन नजर आता है डिसएडवांटेज्ड? I mean सुन रहे हैं? everybody one by one, at least. Can you hear me? जी सर। तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो फिर? In terms of the classes, look at the gender. Who is more powerful, who is less powerful in society? Gender में जो रोल हैं उसमें are men more powerful or women? Men. Men. मैन। Thank you. मैन। In terms of gender, सब लोग ये आयशा। the women are subaltern. No, I mean. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बड़ी उम्र के लोग ज्यादा सबाल्टर्न होंगे या छोटी उम्र के? छोटी उम्र के। Okay, so in terms of age, children are subaltern. आपकी आवाज नहीं आ रही है तो माइक म्यूट कर दें। ठीक हो गया? In terms Yes, sir. of economy, the working class is subaltern. ठीक है? Yes, sir. अब Yes, sir. इनमें से सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज्ड कौन होगा? अच्छा मैडम आपसे Working class. Sir, But a women and the children of working class. Okay. Maybe What a about- girl who is a child and belongs Very to good. working class. Very good. Very good. A minor working class girl is at the bottom of this So this is like first hierarchy. and I hope ठीक है? we get her. A Yes, minor working Yes, sir. class girl. अब ये तो होगा ना subaltern in society. I'm not going to talk. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है can the subaltern speak? Okay, Miss She was the please go ahead. theorist. What you know about the origin? She believes that the subaltern cannot speak for themselves. आपने ये देखा होगा ह्यूमन राइट्स वाली आंटियां आती हैं टीवी पे और वो आके बताती हैं कि खवातीन को हुकूक चाहिए, आती है ना? Yes, sir. वो क्यों Yes, आके sir. बोलती? जिनको हुकूक चाहिए वो खुद क्यों नहीं आके बोलती? ये अजीब बात नहीं है कि जिसका हक है, ये जो आंटियां आती हैं इनको तो हुकूक मिले नहीं होते? yes, sir. मिले होते हैं. उनको तो हर एक चीज की एक्सेस है. They are prosperous in terms of economy. They are advantaged in terms of education as well. They are an advantaged group in terms of the social class that they belong to. But they are speaking for the subaltern. Why can't the subaltern himself or herself speak? Because the subaltern
has accepted this condition, number one. And number two, those who are speaking for the subaltern have their own hidden agendas. They use the causes of the subaltern to their own ends. वो उनकी causes को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ends के लिए. And we will discuss it further when we talk about the subaltern theory and can the subaltern speak. अच्छा, foreign concept जो बहुत important है and which we will be talking about is this. What is it? Decolonization. Decolonization. Now, as we know, the British left India in 1947. Okay, Indo-Pak subcontinent, we'll call it. The British left Indo-Pak subcontinent in 1947. 7. Was the subcontinent decolonized? Was it? कौन इसको सबसे ज्यादा मानता है? No. Yes, sir. Why? Right. Because they Remember. left their rule, Because tradition. Yes. Yes, because decolonization does not simply mean ये कोई repeat कर सकता है? end of physical If you were listening. occupation. It has more to do with कोई repeat कर सकता है ये नाम? it has more to do with Class. mental decolonization. शहर इनके सिर्फ नाम तो ठीक से अगर दोबारा इनको बता दें. If the mind is not decolonized, then the people are not. Right. There was a theory हाँ जी मैसेज भी करते हैं जैसे शामिल हाँ in जी, post-colonial literatures और by let's see this कि person मैसेज से here. पहले बिना मैसेज के let's see कि कौन मैसेज से पहले इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. क्या नाम है ये लिखा हुआ? कौन पढ़ेगा? Ngogi wa Thiong'o. Gugui wa Thiong'o. He came up with this book, which is called Decolonizing the Mind. It is with S because it's British. Decolonizing the mind. Fine. What does it say? It says that you have to deconstruct the thoughts, preferences, and values that derive from a colonial way of thinking. People have to abandon the colonial way of thinking. आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, आप कहते हैं कि with due respect, I want to state, I beg to state. ये सारा क्या है? Colonial mentality. It is submitted. Submission क्या होती है? Are you talking to some god or goddess? No. You're talking to a human being. So both of you are human beings.
you don't have to submit to someone. और आज के हफ्ते के जो Everyone should perform their duties. They should not submit. और शहर के दरमियान Submission किसके लिए होती है? खुदा के लिए। लेकिन क्योंकि हमें ऐसे ही लिखना सिखाया गया, मुअद्दबाना गुजारिश है, गुजारिश काफी नहीं होती, मुअद्दबाना गुजारिश है कि फिदवी को ये कुछ हुआ है और इसके लिए फिदवी को इतने दिन की छुट्टी अनायत फरमाई जाए, इनायत फरमाई जाए। ये हमारे जहन में सारी चीजें शेयर करती हैं और फिर हम उसके मुताबिक जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हमें कॉलोनियलिज्म ने सिखाई। तो ये अब तक आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि जो कॉलोनियल मास्टर्स करते थे सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी वजह से, उनके यहाँ पे रहने की वजह से हमारी जो आदत बनी है, जो हमारे अंदाज बने हैं, जिस अंदाज से हमारे इदारे बने हैं और जिस अंदाज से हमारे इदारों ने काम करना शुरू किया है, वो चीज भी इम्पोर्टेंट है और हमने उस चीज को भी डिस्कस करना है। तो यही पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में होता है। गॉट इट? जी सर। यस सर। It's not just confined to what they did to us. No. What is the impact of whatever they did to us? How are we carrying that weight? Are we carrying it even today or have we abandoned it? इस चीज को हमने देखना है और वो कैसे कैसे हमारे अंदर वो चीज सरायत कर चुकी है। ठीक हो गया? अब आते हैं जो हमने टेक्स्ट पढ़ने हैं एसेंशियल, जो हम जिनके पढ़े बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, वो कौन से? ये नजर आ रहे हैं? यस सर। कौन कौन से हैं? Heart of Darkness, A Passage to India, Things Fall Apart. इंडिया थिंग्स फॉल अपार्ट। ये तीन नॉवेल जो हैं ये तो आप लोगों ने ले लेना है ना अभी। ठीक हो गया? और उनको पढ़ना शुरू कर देना। ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा होंगे। थ्योरी के अलावा जो टेक्स्ट हमने पढ़ने हैं वो ये तीनों। तो थ्योरी प्लस हार्ट ऑफ डार्कनेस ये हमारे मिड टर्म से पहले का हिस्सा होगा। मिड टर्म के बाद हार्ट ऑफ डार्कनेस, पैसेज टू इंडिया, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये फाइनल के लिए ये तीनों होंगे। ये अभी मैं आपको बता दूं। समझ आ गई? यस सर। यस सर। क्या समझ में आई? Theories हार्ट और ऑफ डार्कनेस एंड थिंग्स फॉल मेड, उसके अलावा तीनों फाइनल के लिए। So the theoretical aspect of post-colonial literatures plus Heart of Darkness will be part of midterm exams. midterm. And all the three novels will be part of the final. ठीक हो गए। अच्छा, अब ये तो हो गई ना बात इसकी जो हम सब मिलके करेंगे। एक काम वो वाला है जो आपने अलग-अलग से करना है, जिससे आपने असाइनमेंट भी बनानी है और फिर आपने प्रेजेंटेशन भी देनी हो। वो क्या होगा भला? वो होगा जी एक नॉवल लेना है और जो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आप खुद चूज करेंगे वन ऑफ योर क्लास फेलोज, उसको अपने नॉवल का नाम लिखवा देंगे। जो नाम एक दफा आ जाएगा वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट वीक तक आपने हम पाकिस्तानी ऑथर्स या फिर पाकिस्तानी, हाँ। इंडियन, अफ्रीकन, आप ओके सर। तीनों कैटेगरीज में से ले सकते हैं। पाकिस्तानी लीजिए, इंडियन लीजिए, अफ्रीकन लीजिए। कोई अमेरिकन है तो वो ले लीजिए, लेकिन वो हो पोस्ट कॉलोनियल थीम पे।
बैठा बेशक वो अमेरिका में हुआ वो, लेकिन वो थीम्स जो है वो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कस हो रही है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब ये आप किसको लिखवाएंगे नाम? सर सर हम जिसको ग्रुप में मर्जी ड्रॉप लिखवा कर देंगे देंगे, तुम्हारी ग्रुप में ड्रॉप किसको? कर तुम्हारी देंगे क्लास का सर, ग्रुप में ड्रॉप कर क्लास देंगे। ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे सर। नहीं, ग्रुप में तो ड्रॉप करेंगे लेकिन नाम लिखें अपना, यस सर। अपना नाम लिखेंगे, साथ नॉवल का नाम लिखेंगे। जो नॉवल एक दफा चूज होता जाएगा वो दोबारा नहीं हो सकेगा। लिया जाए। यस ओके सर। ठीक है सर। आप यूज कर सकते हैं एज ए कैरियर, अच्छा इससे सीख सकते हैं। ये हो गया। इन सारे फील्ड्स में जिनमें मैंने नाम लिया सब अब ये जो चीजें आज डिस्कस की हैं इनमें से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो बताइए। सर। यस सर। मोर इम्पोर्टेंट जी बताइए। फाइनली लिंग्विस्टिक्स में माइट हेल्प यू टू सर मुझे भी है क्या जो चीज? मुझे फर्स्ट आवाज वाली नहीं जो थ्योरी है ना, मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट वाली थ्योरी है वो मुझे समझ नहीं आई इतनी अच्छी से जैसे दूसरी तीसरी आई है। आई। अच्छा अच्छा चलिए उसको हम जरा रिपीट कर देते हैं। एडवर्ड सईद कौन था? मैंने सीख ली, मुझे इसकी बेहतर समझ आ गई वो कौन सी चीजें। पैलेस्टीनियन अमेरिकन। ओके गुड, ही वाज अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन पहली सोसाइटी में और दूसरी सोसाइटी प्रोफेसर। कैसे ऑपरेट करती है। और दूसरा सवाल इससे उसने कहा, ये भी हो सकता है, उसने किताब लिखी और उस किताब का नाम ही था ओरिएंटलिज्म। ठीक है, और उसने उस किताब में बताया कि जो यस सर। यूरोपियंस थे ना पिछले 500-600-700 साल में, बल्कि उससे पहले भी 2000 साल, वो हमेशा एक ऐसी जमीन की बात करते आए थे जो कि हमारी जमीन से कल्चरली भी और बायोलॉजिकली भी इंफीरियर है। ठीक है, उसके लोग भी इंफीरियर हैं, वो लैंड भी इंफीरियर है। अब ये चीज उन्होंने अपने लोगों के जहन में बिठाई हुई। ये एक इमेजिनरी लैंड थी लेकिन उसमें वो सारी चीजें बताई जाती थी जो कि ईस्ट में मौजूद हैं, जो इंडिया में और अफ्रीका में मौजूद थी और मिडिल ईस्ट में। तकरीबन यही इलाके जो है ना इनको मिला के ओरिएंट कहा जाने लगा। ठीक है, यस सर। तो ओरिएंट का एक इमेज उन्होंने अपने लोगों के जहन में बना दिया। ओके ये सर। लैंड ऐसी हैं, इन लैंड्स को ऑक्यूपाई करने की जरूरत है, इन लोगों को टेम करने की जरूरत है। हम जो हैं वो हैं सुपीरियर, हम बायोलॉजिकली भी सुपीरियर हैं, मेंटली भी सुपीरियर हैं, कल्चरली भी सुपीरियर। अब ये जो डिस्कोर्स था, ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन एक बन गया कि सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के जहन में थी, बल्कि इस पे किताबों की किताबें लिखी गई, इस पे पेंटिंग्स बनाई, उसको ऐसी एक एग्जॉटिक जगह के तौर पे दिखाया गया। वहां की खवातीन को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो मर्दों की तलाश में फिरती हैं, उनके मर्दों को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो इम्पोर्टेंट हैं। और वेस्टर्न मेल जो है, दैट वेस्टर्न मेल इज फिट टू गो देयर एंड कंकर देम। अब ये सारा कुछ किस लिए था? बेसिकली वो राह हमवार कर रहे थे अपने लोगों के अंदर भी, तैयार कर रहे थे उनको कि आपने वहां पे जाना है। वो लोग हैं इंफीरियर, आप लोग हैं सुपीरियर, और ये चीज वहां पे खत्म नहीं हुई। दैट हैज बीन देयर ऑल अराउंड, शुरू से लेके अब तक ये चीज बरकरार रही है। आज भी ये चीज वैसे ही मौजूद। आज भी अमेरिकन और यूरोपियंस ये समझते हैं कि हमने दूसरे मुल्कों पे जाना है, वहां पे चढ़ाई कर देनी है, क्योंकि वो तो लोगों को तो कुछ शऊर ही नहीं है ना, तो शऊर है सारा हमारे पास। समझ आए कुछ बात? यस सर आ गई। ईस्ट जर्मनी
लेकिन ये थ्योरी जो है वो ये बस इतनी सी नहीं है, हमने इसको फर्दर डिस्कस करना है, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है। बहुत बड़ी किताब है ओरिएंटलिज्म, और ये आप ये समझिए कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो थ्योरी के लिहाज से थी वो इसी की थी, एडवर्ड सईद। ठीक है, और इसी को जहन में रखते हुए फिर Yes, हमने sir. आगे, इसी को जहन में रखते हुए हमने आगे जाके ये टेक्स्ट भी पढ़ने, जो टेक्स्ट हमने पढ़ने हैं वो भी इन्हीं थ्योरीज को भी सामने रखते हुए हम पढ़ेंगे। आप जब ये E.M. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया पढ़ेंगे या जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसे ये थ्योरी जो है ये गलत जनरेट नहीं हुई। यूरोपियंस जो हैं वो अफ्रीकन को और एशियंस को किस तरह समझते थे, किस तरह स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। स्टीरियोटाइपिंग समझते हैं ना, ये जो हम Yes, कहते हैं ना sir. कि पठान सारे ऐसे होते हैं, औरतें सारी ऐसी होती हैं, इसी को स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। वो भी इसी तरीके से स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, अफ्रीकन की, एशियंस की, ओरिएंटल्स की, इन जनरल, अरब्स ऐसे, पर्शियंस ऐसे, लेकिन हम क्या हैं, सुपीरियर। वो विलन दिखाने थे तो हमेशा इस इलाके से चूज किए जाते थे, हीरो दिखाने होते हैं तो अपने इलाकों से चूज किए जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की फिल्मों में नहीं होता। Yes, sir. ये सीन बताओ। Okay, any other question, please? Yes, any other question? No, sir. चलो फिर अटेंडेंस लगाओ। मैडम वो भी की अच्छा, अब ये 25 people are there. I need 12 absent. कौन कौन नहीं है? रोल नंबर बोलिए उनके। सर अब ये वो देखना 12 पड़ेगा। हाँ देखिए। यस सर वो लोग नहीं होंगे, एनएल वगैरह का ग्रुप नहीं होगा। अच्छा बार मैंने लॉक कर दिया ना मीटिंग को, अब नो वन यस कैन सर, एंटर। एनएल नहीं है सर, तो रोल बस नंबर ठीक है। 76 नहीं है, 62 नहीं है, 62 90 भी नहीं है, 76 is absent, 90 93 90 भी एब्सेंट है। यस सर, 90 93 और 2 की वो नहीं लगी हुई प्रोफाइल पिक्चर। किसने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई ये बताइए, वरना उनको भी एब्सेंट ही कर देते हैं, जब बोल तो रहे नहीं है वो। एक शायद सवेरा ने नहीं लगाई हुई 95 ने, और एक नहीं पता। हाँ सर, मैं आपको वो बता देती हूँ जो प्रेजेंट है। जी जी, तो मैं खुद ही बता लेता, पता करा लेता। रोल नंबर 68 प्रेजेंट, Can you hear me? 61 74 is present। चलो छोड़ें। Yes. 61 Can you hear me? 62 3 Present, sir. 64 Halima 68. 64 present, Sahar Zakar. 65 Present, sir. 66 Halima Jain. Present, sir. 67 68. 67 68 We are starting with 67. present है सर 60 68 की चैट बॉक्स में आएंगे अटेंडेंस, 69 माइक का इशू है वो बोलेगी। Khalid. Khalid Pervez. 68. 69 present, Sahar Zakar. Zakarullah. 70 70. Present, sir. 71 Present, sir. 72 Muhammad Islam. 73 72 Alina Muhammad Khan. 73. 74 Muhammad Khadir. Present, sir.
75. Present, sir. Excuse me. 76. 75. Aisha Afzal, Muhammad 77. Present, sir. 78. Shabibi, Muhammad Shehbaz, Present, sir. 78. 79. Fiza Tanseem, Present, sir. 79. 80. 88. Arvind Kaisar, Kaisar Mahmood, 81. Present. 82. 80. Isha Fatima, Nasser Iqbal, 83. 81. Minahal Nasir, Nasir 84. 82. Radhika Mahesh, 85. Present, sir. Salim, Salimullah, कौन प्रेजेंट है? 84. ये किसने बोला? Mohammed Khalil,